So, hello guys, what is up? I am Oman Sheikh. This is Trade Engineering, an engineer who trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. You all know how this will happen only if we don't repeat our mistakes and we have the sufficient knowledge whichever is necessary for trading. That isn't too much, trust me. Like it isn't like a hell lot of things. All it requires is more than knowledge. Like after the sufficient knowledge, the important thing is experience and skill. So yep, let's start. Today I only took one trade. The main problem during this time is that this is my exam time going right now and I am not at all studying, but I'm just taking the stress of studying like I always do. So in that I was not focusing on my trades. I just saw a call of my friend that there's an important level at Reliance. So I did the analysis. It isn't that I just heard the call and I took the trade. I saw that this level is has been facing rejection, but even though it didn't feel sorry, this level has been facing, actually he said this, but when I zoomed out, I found out that uh, this is the next place where the price has got rejected. So I was like, yeah, I will enter only below this. I did enter, so I did place a sell order, but the main thing is that it wasn't in my watch list, and I don't know it. Maybe it's because I read trade. I'm thinking like that I shouldn't take my friend's call. If it would have been green, so I wouldn't have thought like that. But because I usually do take a friend's call, but today how different it was that at that time when usually I trade, I was trading at that time. I am on the PC already, but today it wasn't like that. I just on the turned on the laptop, but I wasn't on this Chrome, and I wasn't like actively trading at that time. So yeah, that was the difference. So that I won't tell that as the reason, but yeah, the main thing I want you to learn from this is that when you are off trading, just be off. Don't be like half in, half out. So that is why I'm thinking that abhi se jab tak my exams are not done, I will not trade. और एक बात है कि I haven't journaled my trades since one or 1 week, 1 or 1.5 weeks. सो मैंने वो भी सोचा है कि जब तक वो नहीं होता तब तक आई वोंट टेक द नेक्स्ट ट्रेड. सो यस, दैट हैज बीन डिसाइडेड. सो आई डोंट नो seriously when I'll be trading the next time, but yeah, it will be obviously after the exams and obviously after I have done my complete analysis and I have my list ready to do. There is a list over here like what things I have to do and what not. So yep, वो follow होने के बाद, सब prepare होने के बाद ही I will get back to trading, because ये ऐसा trade करने में कुछ दम नहीं है. Talking about today's trade, I did take an entry after like seeing the rejection after my friend telling it to me. So yep, I had placed an SL order below this. I got entered on this candle, and then it came back, it went down and then it went up. Initially my SL was somewhere around here, or around here, I guess. No, it wasn't over here. It was here, I remember. यहाँ पे था एसएल, इसके थोड़ा सा ऊपर था. देन आई वाज लाइक, जैसे प्राइस नीचे जा रहा था, आई वाज कीपिंग इट कीप ऑन आई वाज कीपिंग आई वाज ट्रेलिंग इट. एक एक रुपये से वो नहीं, पर एक एक रुपया कंसिडर नहीं कर रहा था, पर लेवल टू लेवल, थोड़ा थोड़ा मिनी लेवल्स पे ट्रेल कर रहा था मैं. तो तो मैं देख रहा था, तो 1 या 1.5 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, तो इसलिए आई एम टेलिंग 1 रुपया, बट फिर भी मैं लेवल्स के हिसाब से ट्रेल कर रहा था. एंड देन ओवर हियर इट प्राइस केम नियर माई लेवल, एंड ऐसा भी होता है कि इधर ही हिट हो गया मेरा एसएल, while my ad kept my SL over here. So yep, I got stopped out. If I hadn't trailed it so much early कि देख के कि भाई अपने को मोमेंटम नहीं मिल रहा है, अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो फिर if I wouldn't have trailed, then SL तो हिट नहीं होता है, and I would have ended somewhere here like yesterday, क्योंकि मैं इतने टाइम तक एग्जिट कर देता हूँ यूजुअली, और I would have exited at break even. Don't know, वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तब क्या करता. बट इसमें मेरी एक मिस्टेक थी, पहली मिस्टेक की, मैं जब ट्रेड नहीं कर रहा था जानबूझ के कॉल देख के खोला, एंड देन जस्ट बिकॉज इट वाज रिलायंस, एंड आई डिड टेक द ट्रेड. एंड सेकंड थिंग वाज कि आई ट्रेड एसएल टू अर्ली. सो यप, these are the two learnings of today's
चैप्टर थर्ड लर्निंग इज दैट अगर जर्नल तुम नहीं कर रहे हो, सो डोंट ट्रेड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ओन मनी एंड टाइम। तो यप दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर हम वही टाइम पे निफ्टी 50 देखेंगे, तो निफ्टी 50 वाज it I took entry over here and then exit over here. It tanked in the initial phase, but then it went up, then it tanked again. But with Reliance में मेरा टारगेट कौन से थे, ये फर्स्ट मिनी टारगेट था, सेकंड थर्ड एंड मेरा एग्जिट, तो यहाँ पे मैं सोचा था। फिर भी छोड़ो, इट डजेंट मैटर राइट नाउ, व्हाट मैटर्स इज द लर्निंग। उसके ऊपर रिग्रेट करके कुछ फायदा नहीं है। मैंने बाकी ये सब बाकी सब मेरे क्या बोलते हो वॉच लिस्ट में थे। This was Asian Paints was making a very nice pennant, but I missed this moves क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया। Then Asian Paints था, टाइटन भी था। टाइटन का क्या सीन था, ये अब टाइटन ऑल्सो गेव इट्स मूव ये सब लेवल्स पे। तो यप इफ यू ऑब्जर्व दैट तुम लोग की मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि लेवल्स तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होती है, इट्स जस्ट द एंट्री एग्जिट विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल्सो। बस वो इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, बाकी सब तो बहुत लोगों को आता है। और कौन से थे बहुत उसमें देखते हैं, एशियन पेंट्स, विप्रो था। विप्रो का मेरा लेवल बहुत ऊपर था, हुआ नहीं। सेम गोes टू इन्फी, इन्फी के तो चार्ट ही मिट गए थे, सॉरी लाइन प्लॉटिंग। टेकएम का भी सेम सीन था कि कुछ ये हुआ नहीं, मेरी प्लॉटिंग यहाँ की थी, देन आई प्लॉटेड ओवर हियर। So yeah, that is it for the video. Hope you liked it. Hope you learned something. And yep, thanks a lot for watching and happy trading. Bye bye.